So the first verse starts from page 4, जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर फोर होता है वहां से। और जो पहला जो लेसन है इसको अर्जुना विषाद योग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि क्योंकि जब अर्जुन बहुत परेशान थे, दुखी थे, एंड देन ही वांटेड टू नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आई शुड फाइट एंड ऑल, दिस इज वेयर फ्रॉम द गीता स्टार्ट्स। बट इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सबसे पहले धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, वो देख सकते थे, he could see what is happening in the Kurukshetra by sitting elsewhere. So Dhritarashtra has asked कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो सारे मेरे बच्चे, मेरे कौरवस और पांडवा, मतलब पांडु के पुत्र, they have gathered together and what is happening, उन्होंने क्या किया, what did they, it is written over there, right? ओ संजय। तो जस्ट आई एम गिविंग यू जस्ट बिकॉज लास्ट टाइम शायद स्वप्ना भी नहीं थी, नेहा भी नहीं थी, आई एम जस्ट गिविंग यू, आप लोग का जो मिस हुआ होगा, बिकॉज इट इज द बिगनिंग। So first thing that we have to understand in this paragraph, if we look at from the samsaric, the materialistic point of view, why we are always sad or we are always into a mode of एंजाइटी और रेस्टलेसनेस और बीइंग वेरी हैप्पी और बीइंग वेरी सैड। हम लोग एक समता में नहीं रहते हैं। ठीक है, समता इज द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू बी इन प्रेजेंट ऑलवेज एंड नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनीथिंग हैपनिंग, राइट? आनंद में जिसको बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑलवेज डीलिंग विद माइंड और अदर्स, राइट? तो हमारी जिंदगी में क्या रहता है, मेरा है और जो मेरा है वो दूसरे का नहीं है, या ये दूसरे का है। तो दैट इज द थिंग बिकॉज ऑफ विच यू आर ऑलवेज इन अ कुरुक्षेत्र, राइट? हमको, अभी मैंने रिसेंटली बड़ी अच्छी बात सुनी, या तो ये मान लो कि सब मेरे हैं, या फिर ये मान लो कि कोई मेरा नहीं है, एटलीस्ट बी ऑन वन साइड। इधर टेक इट एज दैट वे दैट एवरीबडी इज माइन, then you will see God in everything and you will feel whole, complete one day. Or on the other way around, take it that way that I am nobody, I am only God. अगर आप इन दोनों में से एक भी चेतना का यूज नहीं करते हो, तो दैट इज वाई वी हैव स्ट्रगल इन आवर लाइफ, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर। फिर इसमें जो थोड़ा बहुत बताया कि भाई जो कुरुक्षेत्र क्या है और धर्म क्षेत्र क्या है। व्हाट इज धर्म क्षेत्र? दैट बाय बीइंग इन दिस बॉडी ओनली, वन डे we have the capacity to realize who am I. So that is why it is a dharma kshetra. If you apply dharma not only in actions but in your thoughts, in your emotions, in the decisions that you take, the way you perceive this word, the way you take the input, the way you analyze that, then it will become a dharma kshetra for you, because we have not realized that this life of a human being, there is a possibility of making this body as a dharam kshetra. That is why we are into a kurukshetra. ठीक है, कुरुक्षेत्र क्यों हो जाता है? बिकॉज इन कुरुक्षेत्र देर आर कौरवास एंड देर पांडु पांडवास। So what are the Kauravas, as we studied earlier? So the Kauravas are the son of the blind mind, the mind who is ignorant, who does not know the true reality, who just sees that reality which is being shown to us। जहाँ पे एक बल्ब, एक लाइट प्रोजेक्ट करी है, एक टॉर्च प्रोजेक्ट किया है, जो जितना हमको दिखाया जा रहा है हम उसको ही सच मानते हैं, दैट इज ब्लाइंड माइंड। What happens when we are driven by this blind mind? So the first son of Dhritarashtra is Duryodhana. Duryodhana is the desire, the material desire. And then there are 99 more brothers of Duryodhana. So kyunki the problem is that we are driven by the blind mind, then
we are always towards desires. We always want a desire, and because of that desire, which is already mithya, which is already an imagination, we create so many other negativities within us: greed, hatred, jealousy, और पता नहीं बहुत सारी चीजें. If the people who have book पीछे पढ़ लेना, Guruji has told so many things. क्या क्या vices हमारे अंदर आ जाते हैं, right? I would want all of you to open the video if it is possible. It feels better. So what I was saying. चालू है, मैं भूल गई. हाँ हाँ, better लगता है. Hi करुणा जी, nice to see you. दी लंच मैं इधर ही हूँ, लेकिन मैं भूल गई. ओपन. हाँ, दी लंच करके ओपन करती हूँ. ठीक है ठीक है. Yes, so I was saying क्या करते हैं हम when we are driven by the blind mind. It is for all of us. You think of it कि एक बहुत बड़ा डार्क स्पेस है जो ये यूनिवर्स है, वहां पे सिर्फ एक लाइट डाली हुई है, एक ही लाइट है स्टेज के ऊपर, हम उसको रियलिटी मानते हैं. And what do we do? Because of that reality, we create a desire that I also want to act on this drama of life. And because of that, then what we do? We consider, first of all, we consider ourselves as this body. That is the biggest mistake of the blind mind. Why? Though we have the ability to realize that I am God, we all of us have that ability, but we have not been taught, right? So that is why what we do because of Duryodhana and the Duryodhana's brothers, because of the blind mind, we keep on creating the Kurukshetra within ourselves. So there is a Kurukshetra, there is a Dharmakshetra, and Dharmakshetra, Kurukshetra is that both of these things they exist within us. In the further pages, we'll read, Guruji has so beautifully told about the material world, the astral world, and the causal world that is there within us. अगर आपने गुरुओं को कभी सुना होगा तो गुरु लोग क्या बोलते हैं? रियलिटी इज हियर, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर टू सी द रियलिटी. So what they are referring to at that time they are saying that if you come out of your mind and you use your intellect rightly, so when you use your intellect rightly with wisdom, you are bringing the Jupiterian energy within you, ज्ञान की energy ला रहे हो, and when you walk on to that path, one day that path will take you towards the realization of who am I. So जितना भी ये जद्दूज है, whatever Gita we are reading, whatever we are doing, it is all about conditioning and tuning our mind so that our mind knows that whatever you are thinking is truth is not true. Right? So this Kurukshetra, first Kurukshetra that we fight is in ignorance. मेरा है, उनका है, मैं फिर we think that we are limited, that I will die, right? Then it is my property or whatever. मुझको स्टेटस चाहिए, मुझको नेम चाहिए, people should know me, बहुत कुछ है, अलग अलग चीजें हैं. But one day it will all be not be there. So once when I understand, though it will not be there, still I exist. So then again the Kurukshetra start. One Kurukshetra is in the ignorance of I want that, मेरी property किसके पास जाएगी and all. Then when we get the wisdom from the Guru given wisdom, then again the Kurukshetra starts. That Kurukshetra is to create the kingdom of the Dharmakshetra. Understood? तो कुरुक्षेत्र तो लड़ना है, वहां तो होना जरूरी है. In the Kurukshetra, you want to be the Kauravas or do you want to be the Arjuna that is all left to you? But one day, हमने previous pages में we studied that one day you will have to fight and you have to win this battle if you want to come out of this, world, this universe of Earth. Earth is just one of the step into the hierarchy of the universe, but we are so ignorant that we are only here. So this is the crux of what we have studied of this first paragraph, right? Now Guruji has expanded this, meaning that how from the very beginning of the life we are fighting this Kurukshetra. So this starts on the page number 7. So I'm reading it out. From the moment of conception to the surrender of the last breath, man has to fight in each incarnation innumerable battles. Battle of that is biological, hereditary,
बैक टू गुरुजी ने बहुत सारी बताई है, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारी बैटल्स है दैट वी हैव टू फाइट someday or the other. In each life we are fighting. And then there are so many varieties of inner and outer conflicts within us. Competing for victory in every encounter are the forces of good and evil. Whatever war we are fighting in each incarnation, it is psychological war. Even if you talk about the extremists, the terrorists, what they are doing, they are fighting the war. So there is a conflict. But what ultimately they are trying to do, they think that what I think is right. So they are trying to establish good, though they are using the evil means. Apart from this, whatever fight we fight within, mine, theirs, my property, my job, my status, वगैरह वगैरह, also we are trying to establish good, which we think that is good, right? So the definition of good has to be changed. That definition of good should come from the wisdom. That is why we read scriptures, so that we are not deluded by the definition of good. Because for everybody, for each one of us, the definition of good is only about if I am being satiated, if I am being given everything, then that is good. So that has to be changed. The whole intent of the Gita is to align man's effort on the side of dharma or righteousness. तो हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं? So that the definition of good is completely in the essence of dharma. Right? As that day, Lata was asking, and I have been constantly thinking about that question. Lata ne pucha, ma'am, whom shall I believe? Shall I believe in you or shall I believe in the other people I listen to on the YouTube? So for you, the answer is, Lata, is the dharma being established? Whatever you choose. When people say that you have to fight, no, you have to speak. Is the dharma is being established as per the laws given by God? Then you are choosing the right thing. Right? If people are telling you the shortcuts, then it is Rahu, it is Maya, because the truth always takes time to win. हम सबने सुना है कि अंत में सत्य की विजय होती है, बट सत्य की विजय के लिए सत्य के साथ चलना पड़ता है. So I hope that answers you now, Lata. Right? The ultimate aim is self-realization, the realization of a man's true self, the soul, as made in the image of God, one with the ever-existing, ever-conscious, ever-new bliss of spirit. तो aim क्या है हमारा? To go back to that state from where we have come. उसी के लिए ये सारी लड़ाई है. ध्यान करना, मंत्रा करना, प्राणायाम करना, विजडम पे चलना, so that we go back. अभी हम भटके हुए हैं अभी हम लोग. The first contest of the soul in each incarnation is with other souls seeking rebirth. अब गुरुजी स्टार्टिंग से बता रहे हैं एक आत्मा का जो ये लड़ाई है कैसे स्टार्ट होता है. With the union of sperm and ovum to begin the formation of a new human body, a flash of light appears in the astral world, the heavenly home of souls between incarnations. So what happens when the souls are ready to incarnate? So you consider it as when a space in the consciousness when the souls remain there when they are ready to take birth. So it is called human birth ready state. There would be many souls in that part of the consciousness. So when the sperm and the ovum meet, so a flash goes into the astral world, and that flash has a frequency. Depending upon the frequency of that flash, the souls whose frequency matches them, they rush towards that flash, and they want to, gain the access to that ovum and the sperm, that egg which comes there. So Guruji is telling the fight starts from there itself. Because कहते हैं ना कि ह्यूमन बर्थ देना है बहुत मुश्किल है. Because all those souls they are searching for, they cannot take birth anywhere just like that. They will take birth only where their at least 99% program of theirs is matching. If they have a program of fighting, of being angry, of hurting others, or maybe taking advantage, for example, this is the program. So they will search for those parents who have this kind of program or the family lineage.
and there would be hundreds and thousands of souls. And the souls try to put their flag over there that I want to take birth through this womb so that I finish off my karma. So you see where the fight starts, the Kurukshetra starts for us. That light transmits a pattern which attracts a soul according to that soul's karma, the self-created influences from actions of past life. In each incarnation, karma works itself out partly through hereditary forces. The soul of a child is attracted into a family in which heredity is the conformance with the child's past karma. So always remember that is why one clue. Never question why I am born in a particular family, why I have particular kind of parents, why do I have particular kind of siblings or relatives. Because they are the energetic match for you. That is why you are there. राइट इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि कम बैक टू योरसेल्फ रिफ्लेक्ट बैक एवरीथिंग इज विद इन यू दैट इज व्हाई दैट इज अ mantra for us isn't it many souls why to enter this new cell of life only one will be victorious so see only one out of there are thousands of souls but only one is able to take birth right within the mother's body the unborn child struggles against diseases, darkness, and periodic feelings of limitation and frustration as the soul consciousness in the unborn child remembers and then gradually forgets its greater freedom of expression during its astral sojourn. So, second Kurukshetra कब start हुआ? पहला Kurukshetra into the soul world it is starting. Then who is going to take the birth through this womb? Second Kurukshetra is when the soul is in the womb for the 9 months. It is fighting from the diseases, from the darkness over there, and the limited feelings, frustration. पहले उसको क्या होता है? Because the soul remembers that I was free. So it is struggling to be there into this womb. And then they gradually forget it. Its greater freedom of expression during its astral sojourn. So, for Paramahansa Yogananda, the people who have read autobiography of a yogi, because he was a yogi already, when he was in the womb, he remembered everything about himself. उन्होंने अपनी autobiography में लिखा है that I remember that I was in my mother's womb and I was feeling so constricted in my mother's womb. I could listen to the soothing voice of my mother. So a yogi can be awakened and alert in the womb also. But for a normal human being like us, we forget all that. When we are in the womb, we remember. But the moment we are out of the womb, we forget everything. The soul within the embryo also has to contend with karma, which is influencing for good or ill the formation of the body in which it is now a resident. Additionally, it encounters the vibratory influences that reach it from outside. The environment and actions of the mother, external sounds and sensations, vibrations of love and hate, peace and anger. तो अब जब वो आत्मा जब वो वूम्ब के अंदर है तो वो फाइट कर रही है डार्कनेस से अपनी पुरानी यादों से बिकॉज द सोल रिमेंबर्स वेयर आई हैव बीन and the soul keeps on telling to itself that in this life I am not going to make any mistake. I will mend my mistakes. So it's a struggle for the soul. At the same time, what is happening outside in the mother's environment, the soul, the child is also affected by all that. So that is why, see, when we say karma, 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 karma is there, but there are many ways of changing that karma or, you know, lessening the effect of the bad karma if we only and only went with our culture, right? So when in our culture it was being told that when a woman is pregnant, she should be into a very good environment, she should be peaceful, she should be happy, she should be reading Gita, right? She should be reading Ramayana. Why? अभी ये बोलेंगे बिंदास ऑर्थोडॉक्स है बस उसके आगे कुछ पता तो है नहीं क्योंकि आई एम नॉट ऑर्थोडॉक्स बोल के निकल लेंगे पिक्चर देख ले इवन आई हैव सीन रिसेंटली अ वीडियो where a pregnant woman is in that discotheque and she is happy
and she has written, my child is going to be like me and my husband. Wow, this is the samskar we are giving today, right? But if you know the importance of it, why? Because when the mother is reading the Ramayana, when she is reading all the scriptures, when she is chanting, she is instilling the soul with the soul power, with the power of the good frequencies of mantras, so that when in the later life the child encounters the problems because of the past life karmas, the child's soul would have those memories of mantras and the right direction. Understood? So that is why it is so important that a mother, माँ को भगवान क्यों बोला गया? Because if a mother, when she is pregnant, if she knows what is the right action she has to do, then she can change the destiny of the soul. Right? हम कहते हैं ना कि भगवान ही destiny change कर सकता है बस. So mother is the first God. That is why. If she knows the importance of the Garbha Sanskara. Right? Now, the next paragraph. Now, I wanted to just tell this thing. तो जो माँ जब प्रेग्नेंट होती है and when the people around her they don't have the good frequencies, that is also registered into the mind of the child, and that also can be seen in the astrological chart, that how the mother had been feeling, and then that also becomes the karma of the child, that. So the struggles that the mother was going through, now it is registered into the memory of the child, and he has to go through that karma also. So you should be so careful, and you should be telling this knowledge to everybody, in India at least. After birth, the struggles of the infant are between its instincts to seek comfort and survival and the opposing relative helplessness of its immature bodily instrument. ये जब 1 मिनट बचेगा इस मीटिंग का, मैं बता दूंगी, अभी 10 मिनट का टाइम आ रहा है. तो फिर नेक्स्ट लड़ाई क्या है? द चाइल्ड फील्स हेल्पलेस and the child also wants to feel the comfort. So sometimes it is crying, sometimes it is being comforted. So this is again the Kurukshetra. Why we are referring to all this? Because it is showing in each aspect of us this duality. The moment the soul thinks of taking birth, the duality starts. And this duality keeps us away from the truth, because the truth is non-dual. Truth is कि मैं ईश्वर हूँ या मेरे अंदर ईश्वर है, वो ही सत्य है. तो उसमें मेरा तेरा अंदर बाहर कुछ नहीं होता. Right? Till the time we are into duality, we are not seeking God. The child begins his first conscious struggle when he has to choose between his desires to play aimlessly and his desire to learn, study, and pursue some course of systematic training. तो conscious struggle कहाँ पे start हो जाता है बच्चे के लिए? One part of his wants to study, other part says, or the mother says that you have to, sorry, the one part mother says you have to study, and the child says no, I want to play. तो वो struggle consciously start होता है बच्चे के लिए. वो अपने मन को मारता है, रोता है और तब पढ़ता है. Gradually, more serious battles arise, posed upon him by karmic instincts from within or by bad company and environment from without. The youth finds himself confronted suddenly with a host of problems that often he has been ill prepared to meet. So as I told earlier also, 9 to 10 years is good time. The moment the teenage comes, the past life memory starts to come up. So the child feels very frustrated. उस समय पे कौन कौन सी टेम्पटेशंस आती है बच्चों को? टेम्पटेशंस ऑफ सेक्स, ग्रीड, प्रीवेरिकेशन का मतलब डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज राइट, मनी मेकिंग बाय इजी बट क्वेश्चनेबल मीन्स, pressure from the company he keeps, and social influences. The soul is struggling now. Parents at home, they are asking the person to have a particular kind of behavior, particular kind of value system. The peer pressure, the people outside, his friends, if it is a bad company, so he's struggling in between these two. The youth usually discovers he possesses no sort of wisdom with which to fight the invading armies of worldly experiences. तो जिनके पास बुक है, ये मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
The youth usually discovers he possesses no sword of wisdom with which to fight the invading armies of worldly experiences. The adult who lives without cultivating and employing his innate powers of wisdom and spiritual discrimination finds inexorably that the kingdom of his body and mind is being overrun by the insurgents of misery, making wrong desires, destructive habits, failure, ignorance, disease, and unhappiness. ये हम सबके साथ होता है because the adult who lives without cultivating and employing the innate power of wisdom and spiritual discrimination. None of us as an adult had that knowledge or the spiritual discrimination to choose right or wrong. And because of that, we have been choosing only wrong things, which the society approves of, which the people approves of. And then what it brings eventually to us? It brings us wrong, misery making wrong. हमने वो डिजायर कर लिए जो हमारे लिए मिजरी क्रिएट करेंगे, राइट? अच्छा, ये माया भी इतनी स्ट्रांग होती है. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर that Maya is so strong that even though we listen to Gyan or we have some problem in the life, once the problem is gone, once this Gyan has faded away, we again go back to Maya. Right? So we have to be aware of this fact also that Maya is very powerful. So, but it is powerful because we have given up. We are not using our wisdom and our willpower. The day we start to use our wisdom and willpower, then this Maya cannot take over us. Right? So, page number 9, the first paragraph we are reading. The yogi, the awakening man, is confronted not only with the external battles fought by all men, but also with the internal clash between the negative forces of restlessness which are arising from manas or the sense consciousness and the positive power of his desire and effort to meditate, supported by buddhi intelligence, when he tries to re-establish himself in the soul's inner spiritual kingdom. The subtle centers of life and the divine consciousness in the spine and the brain. So, for a normal human being, the Kurukshetra is happening only one way. That I have to achieve something. How shall I achieve it? How much money do I need for that? From where shall I take the loan? Which business shall I do? That is a Kurukshetra. And then if they have some losses, if they have some diseases, they are crying and they're going into depression. That is a one of the Kurukshetra it is going on. But then Guruji says that for a yogi, the person who chooses to be onto the path of wisdom, now the Kurukshetra is inner, because there is a clash between the desire which I had into the past and now the desire that I want to be into the wisdom and into the peace. The positive desire is the effort to meditate, choose the thought which is right, which is accurate according to the intelligence. और वो क्यों करता है एक योगी? The yogi wants to establish inner spiritual kingdom where in the subtle centers of life and the divine consciousness in the spine and the brain. हमारी spine और brain में जो हमारी subtle bodies है, the yogi is each day doing the fight, the battle, so that one day the wisdom and peace is established here within me only. It is not outside. The Gita therefore points out in its very first stanza the prime necessity to man of nightly introspection, that he may clearly discern which force, the good or the evil, has won the daily battle. तो हमने फर्स्ट जो हमने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र पढ़ा, द फर्स्ट वर्ड, उसमें गुरुजी ने क्या बोला? योगी के लिए क्या है? Each night we should ask into the Dharamkshetra, Kurukshetra throughout the day, who won? Did my negative tendencies win? Or did my positive convictions to be right, to be peaceful won? This reflection should be done each day by a yogi. This is called Swa Adhyaya in the real terms. To live in harmony with God's plan, man must ask himself each night the ever pertinent question,
gathered together on the sacred bodily tract, the field of good and evil actions, what did my opposing tendencies do? तो हमको रोज क्वेश्चन करना है अपने आप से. Which side won today in the ceaseless struggle? The crooked, tempting, evil tendencies and the opposing forces of self-discipline and discrimination. Come now, tell me, what did they do? So this is what is happening. The yogi, after each practice of concentrated meditation, asks his power of introspection assembled in the region of consciousness, in the cerebrospinal axis, and on the field of body's sensory activity, eager for battle, the mental sense faculties that try to pull the consciousness outward, and the children of the soul's discriminative tendencies that seek to reclaim the inner kingdom. What did they? Who won this day? तो गुरुजी ने यहाँ पे क्यों बोला द मेंटल सेंस फैकल्टीज दैट ट्राई टू पुल द कॉन्शियसनेस आउटवर्ड? क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस है उससे जब तक ब्लाइंड माइंड ड्रिवन है, इट ऑलवेज कीप्स अस आउटसाइड. दूसरे में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है. वी आर, मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो वी आर बाह्य मुखी. व्हेन वी आर मेडिटेटिंग, वी always remember people who are too much into blaming, complaining, looking everything outside, they have the most difficulty to meditate. Because when you go to meditation, you will go into that space where you will start to reflect back upon yourself. You have suppressed so much within yourself. So that suppression, that suffocation starts to feel. That is why that is why meditation is not an only way of the spirituality. You have to have the swadhyay, you have to do the pranayam, you have to have the right knowledge, so that when you start meditating and those things which were suppressed within you, when they start to come out, you should have the right tools and the understanding how to deal with it. Right? So that is why I never say to the people, meditate and just live a normal life. No, it is better not to recommend meditation to people. If they want to live a normal life and they want to meditate, nothing is going to happen. They will go crazy. Right? Many people complain that I started to become more depressed, I started to become more angry. Yes. So you have to walk on the path so that you keep on working on that. Right? The ordinary individual, like a skirmish-scarred, beleaguered warrior, is all too conversant with the battles. But often his haphazard training has been wanting in an understanding of the battlefield and of the science behind the attacks of opposing forces. That knowledge would increase his victories and lessen the bewildering defeats. तो एक वो कह रहे हैं कि जो एक नॉर्मल आदमी होता है, वो अपनी नॉर्मल बैटल्स फाइट करता रहता है, परेशान रहता है और एक हारे हुए सैनिक की तरह पड़ा है. बट जब उसको समझ में आता है कि दिस इज नॉट इट, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, देन व्हेन दिस पर्सन स्टार्ट टू गो टुवर्ड्स नॉलेज, धीरे धीरे वो जो बैटल है वो डिफरेंट बैटल स्टार्ट होती है उसके अंदर. That knowledge would increase his victories and lessen the bewildering defeat. In the historical telling of the cause of the war of Kurukshetra, the noble sons of Pandu reigned virtuously over their kingdom until King Duryodhana, the wicked reigning son of the blind King Dhritarashtra, cleverly took away from Pandavas their kingdom and banished them into exile. तो गुरुजी कह रहे हैं पहले जो पांडवास थे, they were the actually right people who would have been there ruling the Hastinapur, but उनसे ले लिया गया था because they went to jungle with their father and then Dhritarashtra was given the reign for some time. वो स्टोरी हमको पता है. तो विकेटली जो दुर्योधन था उसने वो ले लिया था, तो उसका मीनिंग बता रहे हैं, उसका मतलब क्या है सिंबॉलिकली the kingdom of body and mind rightfully belongs to King Soul and his noble subjects of virtuous tendencies. But King Ego and his kinsmen of wicked, ignoble tendencies cunningly usurp the throne. When King Soul arises to reclaim his territory, the body and mind become the battleground.
तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, आइडियली इट वाज पांडु एंड हिज सन्स हु वर द राइट हेयर ऑफ द हस्तिनापुर, बट देन they were put into exile and दुर्योधना took it over. तो उसको सिंबॉलिकली क्या बता रहे हैं गुरुजी, कि जो सोल है, द सोल पावर, द सोल इज द राइट एयर ऑफ दिस बॉडी, राइट, एंड सोल के साथ उसके नोबल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स कौन से उसके, वर्च्यूज, द राइट टेंडेंसीज, they were supposed to rule this body of ours. So we had to go with the soul knowledge, the soul power. We had to use the good qualities by so that we live rightly in this world. But what happens? King ego, that is blind Dhritarashtra, that takes over this body. ईगो इसको टेक ओवर कर लेती है, और किंग ईगो के साथ क्या आता है, उसके उसके सब्जेक्ट्स आते हैं, वो क्या है, हमारी विकेड टेंडेंसीज, इग्नोरेबल टेंडेंसीज, जो हमारे ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है, एंड वी डोंट इवन नो, वी थिंक दैट वी आर राइट ना. You know, friends, what is the main cause of depression in people? Because they don't know what is right. They keep on establishing that truth, that fact that has been told to them by the people in the society or by their parents. Since they don't have the right truth with them, they try to achieve something which is probably not possible. They try to achieve something, and if they fail, they feel that they are useless because they have not been told the truth actually. So that is why depression comes, because we don't have the light of knowledge. If we have the light of knowledge, then no matter how many failures come to us, what diseases or problems come to us, we will never be depressed. Right? So that is why knowledge should be given from the very beginning of the life. Now, Guruji says how King Soul rules over his bodily kingdom, loses and then regains it. It is the essence of Gita. तो गीता का essence में हम what we are studying, कि soul ने कैसे lose कर दिया bodily kingdom को और ego ने उसको take over कर लिया, और फिर हमको वापस से we have to establish our own the kingdom of the soul. So Gita gives us that manual. बहुत लोग बोलते हैं ना, Gita is the manual of how to live life. So Gita is that manual which will help us to live with the right value system. The organization of man's body and mind reveals in its detailed perfection the presence of a divine plan. Know ye not that ye are the temple of God, and that Spirit of God dwells in you. The Spirit of God, his reflection in man, is the soul. The soul makes its entry into matter as a spark of omnipotent life and consciousness within the nucleus formed by the union of the sperm and ovum. As the body develops, this original seat of life remains in the, अब ये बहुत interesting है, this seat of life remains in the medulla oblongata. The medulla is therefore referred to as the gateway of life through which King Soul makes his triumphal entrance into the bodily kingdom. In this seat of life is the first expression of the incarnate soul's fine perception, imprinted with the karmically designed pattern of the various phases of life to come. So गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जो सोल होती है उसकी सीट कहाँ पे है? Where is the soul seated? It is, जो हम बोलते हैं ना, ये पॉइंट बोलते हैं, it is actually the medulla oblongata, जो अपना ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम के पास जो पार्ट होता है. Soul is actually, it is the mouth, it is called the mouth of God. So how will the cosmic energy enter into my spine? So it comes from the crown chakra, but in the physical body it goes down through the medulla oblongata. और वहां पे जो ये सोल सीटेड है, गुरुजी इज सेइंग कि दिस पार्ट ऑफ सोल हैज गॉट ऑल द इम्प्रिंट ऑफ द पास्ट कर्मास. It comes along with it already. By the miraculous power of prana or intelligent creative life force guided by the faculties of the soul, the zygote develops through the embryonic and the fetal stages into a human body.
The creative faculties or instruments of the soul are astral and causal in nature. When the soul enters the primal cell of life, it is wearing two subtle bodies. Okay. तो हमने क्या समझा कि जो वो ओवम और स्पर्म मिले, तो जैसे ही वो स्पार्क हुआ, सोल वहां पे आ गई. सोल, the energy enters through the medulla oblongata. This part of the soul has all the imprints of the past life. Now Guruji is saying, जो ये सोल है उसकी क्रिएटिव फैकल्टीज है. क्या है? The creative faculty or the instrument of the soul are astral and causal in nature. So there are two faculties of the soul. One is astral, one is causal. When the soul enters the primal cell of life, it is wearing two subtle bodies. A causal form of thought trance, which in turn is encased in the astral form of life trance. The causal body, so named because it is the cause of the other two encasements, consists of, okay, पहले इतना बताती हूँ. Causal body क्या है? गुरुजी बता रहे हैं. Causal body is called the कारण शरीर. Because कारण शरीर exists, the existence of the causal body gives existence to the astral body and the physical body. Understood? So we can say, हम बोलते हैं ना कि हमारे जो कर्मा है, our karma, we come with the prarabdha karma, but then there is sanchit karma. Sanchit karma is what? Which is keeping us bound to the earth. So what is causal body? Causal body is that which has got all the sanchit karma of ours. Till the time our causal body is there, we have to again and again come back on the earth. Understood? तो जो causal body है उसके कारण गुरुजी बोलते हैं it is cause of the other two soul encasements consist of 35 ideas or thought forces. तो जो cause है उसके अंदर क्या है? Thoughts है. उसके अंदर गुरुजी ने क्या बोला? थॉट ट्रॉन्स बोला उनको. और एस्ट्रल बॉडी को क्या बोला? लाइफ ट्रॉन्स, प्राणा. राइट. तो अभी हम बोलते हैं कि हर एक चीज का कारण एक सोच है. परमात्मा ने सोचा, लेट मी एक्सपीरियंस हु एम आई और हाउ डू आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ. तो वट एवर दिस यूनिवर्स इज गोइंग ऑन, it is the thought of the God that I want to experience myself, right? In the same manner, I have been telling you always that you should be always, finally, what you have to change, you have to change the way you think. Because the way you think is already deciding your future. Because the moment you think, you are touching your emotional body, the astral body, right? For example, I am not good. This is a thought. But the moment you think a thought, there are emotions which are affected by that thought. So emotion would be helplessness, shame, guilt about, and then you start to feel bad in your body also. If you would have disassociated this thought with the emotion, then the thought would have been only a thought, right? A thought has the ability to create an experience because we create emotions, we attach emotions with the thought. That is cause. Understood? So if today you have a particular thought and with that thought you keep on attaching certain experiences, emotions, you are already recreating the energy of feeling and experiencing that. That makes sense? This is what a causal body is referred to as. जब तक, so till the time I think I am this body, till the time I think I am limited, till the time I think only this word exists, till the time I think only whatever I see exists, there is no karma. So what is there in my causal body? Ignorance. So I will keep on coming back here. So I have to change my thoughts that I am aham brahmasmi, that this life is short-lived, that I am much more than this. So the moment I start to work upon my thoughts, I'm actually changing the causal body. Right? So now we will understand what is astral body, how causal body is
influencing the astral body. ओके तो ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे. जो causal body has 35 ideas or thought forces which I have termed thoughtons, from which is formed the astral body of 19 elements and the physical body of 16 gross chemical elements. So the 19 elements of the astral body are intelligence, that is buddhi, ego, ahamkara, feeling, that is chitta, mind, that is manas or the self-consciousness. Then 5 instruments of knowledge, जिसको हम ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं. ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया सबने सुना है. तो ज्ञान इंद्रिया क्या है? The subtle counterparts of the senses of sight, hearing, smell, taste, touch. तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया हैं. Smell, hearing, sight, taste, touch. Then we have 5 karma indriyas. Those are called 5 instruments of action. The mental correspondence for the abilities to procreate, excrete, talk, walk and exercise manual skill. तो क्या क्या होते हैं हमारी ओके स्वप्ना बाय. तो हमारी जो कर्म इंद्रिय है वो क्या है? हमारे 2 हाथ, 2 पैर, हमारा माउथ, then the ability to procreate from that organ and to excrete. ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी. Then 5 प्राणास are also there. प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान हम सबने सुना है. 5 प्राण होते हैं हमारे. तो 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारा. राइट? इंटेलिजेंस, ईगो, फीलिंग, माइंड. This all together makes the astral body. समझ में आ रहा है सबको? And this astral body has the impression of the past life, the karma that we have done. So the prarabdha karma that we bring, its imprint is on the astral body, and this astral body will run this physical body. Fine with everybody? So today we understand that we are not only the physical body, we are the astral body, we are the causal body also. तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट मैं इतनी लिमिटेड भी नहीं हूँ. मेरी एस्ट्रल बॉडी भी है, मेरी कॉजल बॉडी भी, जो दिखती नहीं है. इट इज नॉट विजिबल बट इट इज देयर. एंड द गुड थिंग इज इट इज गवर्निंग मी एक्चुअली, एंड आई थिंक दैट आई एम गवर्निंग माई सेल्फ. नो, माई कॉजल बॉडी एंड माई एस्ट्रल बॉडी इज गवर्निंग मी. मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार मुझे गवर्न कर रहे हैं कि नहीं? राइट? मेरी 5 सेंसेस मुझे गवर्न कर रही है कि नहीं? 5 प्राणा को चेंज करने के लिए आप कुछ कर सकते हो क्या? नो. आपकी जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क बेस्ड अपॉन व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी. मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, उसके अनुसार हम अपनी कर्म इंद्रिया यूज कर रहे हैं. सो द योगी फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू control my physical body, then I have to go into my astral and then to the causal. Guruji will tell in this beautiful chapter where is the astral body established in my physical body and where is the causal body. So अभी आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, दूसरों को बता सकते हो आप ये बातें, है ना? ओके, ठीक है जी. द 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राणा. So empowering the performance of crystallizing, assimilating, eliminating, metabolizing and circulatory functions of the physical body, जिसको हमने प्राणापान, व्यान, उदान, समान बोला है ना. ये अपनी 5 प्राण है. These 19 powers in the astral body are what build, maintain and enliven the gross physical body. So always remember, मेरी physical body को enliven, जो जिंदगी मिल रही है वो मेरी astral body से मिल रही है. ठीक है? The centers of life and consciousness from which these powers function are the astral brain or the 1000 petaled lotus of light and the astral
cerebrospinal axis or sushumna containing 6 subtle centers or chakras. अब देखो फ्रेंड्स, अभी अब समझ में आएगा एस्ट्रल बॉडी कहाँ वर्क करती है, वेयर इट इज एस्टैब्लिश्ड इन माय बॉडी. सो यहाँ पे हम बोलते हैं 1000 petal लोटस होता है. दिस इज फ्रॉम वेयर वी आर रिसीविंग द एनर्जी ऑफ गॉड. एंड द स्पाइन में जो सुषुम्ना नाड़ी है, और उस सुषुम्ना नाड़ी में 6 हमारे चक्रा है. ही इज नॉट कंसिडरिंग दिस एज द चक्रा, राइट. तो जो हमारे 6 चक्र है यहाँ से लेके, दैट इज वेयर द एस्ट्रल बॉडी इज. एंड आई टोल्ड यू द एस्ट्रल बॉडी कैरीज द imprints of the past life. So that is why each one of us has different chakras, balanced or imbalanced or whatever, right? Because आपके चक्रा will be dependent on what kind of prarabdha karma you are bringing here. And that is why it is also the part of your astral body, because this astral body will decide what kind of experiences you are going to have in this life. But a yogi is the one who changes this with a lot of struggle, okay? And with lot of hard work over the time period, but the yogi can change it. A normal human being lives in accordance to what is there in the astral body and then goes away and keeps on coming back. These are located, okay, so he's telling about the 6 subtle centers. These are located in relation to the physical body in the medulla and in 5 centers in the spine, cervical, opposite the throat, dorsal, opposite the heart, lumbar, opposite the navel, sacral, opposite the generative organs, and coccygeal at the base of the spine. तो गुरुजी अब समझ में आ गए, फिजिकल बॉडी है, फिर एस्ट्रल बॉडी है. एस्ट्रल बॉडी क्या है? सुषुम्ना, हमारे चक्रास, और 6 चक्रा उन्होंने कहाँ बोला? मेडुला में बोला. Or the 1000 petal lotus, that is our astral body. Then we have third body also. Coarser forces of the mind manifest in the grosser structures of the body, but the fine forces of the soul, consciousness, intelligence, will, feeling require the medulla and the delicate tissues of the brain in which to dwell and through which to manifest. तो जो मन की जो कोर्सर फोर्सेस है, जो ग्रॉस फोर्सेस है, वो किसके थ्रू मैनिफेस्ट होती है हमारी बॉडी में? थ्रू द चक्रास. जो कौन सी? कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, विल, फीलिंग. अब जो ये है द इंटेलिजेंस है, विल पावर है, फीलिंग है, वो कहाँ से गवर्न होती है? वो दैट कम्स फ्रॉम मेडुला टुवर्ड्स एंड द डेलिकेट टिश्यूज ऑफ द ब्रेन. मतलब कि जब आप कहते हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, तो वो बॉडी में कहाँ फील होता है? वेयर? अंडरस्टूड? सो ही सेइंग जो ग्रॉसर एस्पेक्ट्स है एस्ट्रल बॉडी के, वो हमें बॉडी में फील होते हैं. भूख लग रही है तो यू नो यू विल ईट समथिंग. बट व्हेन यू फील समथिंग, व्हेन यू सेंस समथिंग, वो भी तो सोल की इंटेलिजेंस है ना. इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, विल, फीलिंग, वो आपको कहाँ से महसूस हो रहा है? वो आपको मेडुलर से महसूस होता है. मेडुलर से वो आते हैं फ्रीक्वेंसीज, एंड फ्रॉम द ब्रेन यू फील इट. In simplistic terms, the inner chambers of the palace of King Soul are in the subtle centers of super consciousness, Krishna or Christ consciousness, and cosmic consciousness. तो एक्चुअली में गुरुजी क्या कह रहे हैं? तो जो सोल है वो कहाँ रहती है? एक्चुअली में वो यहाँ रहती है. इसको हम बोलते हैं कुटस्थ चैतन्य, कृष्णा कॉन्शियसनेस इसको हम बोलते हैं. सो द सोल इज रिजाइडिंग हियर, एंड बाय बीइंग हियर इट इज गवर्निंग द होल बॉडी. These centers are respectively in the medulla, frontal part of the brain between the eyebrows, seat of the single or spiritual eye, and at the top of the cerebrum, the throne of the soul in the 1000 petal lotus. तो गुरुजी बोल रहे हैं जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पे है, और जो वो 1000 petal लोटस की बात जो हम कर रहे हैं, और जो मेडुला, तो दिस पार्ट इज वेयर द सोल रिजाइड्स. And by being here, by being in medulla, by being in the crown chakra, by being in the, if we allow the soul to take over, this is how it governs our body. In this state of consciousness, King Soul reigns supreme, the pure image of God in man.
But when the soul descends into body consciousness, it comes under the influence of Maya, that is cosmic delusion, and avidya, individual delusion or ignorance, which creates ego consciousness. तो आत्मा जब डिसेंड करती है तो वो किसके बीच में फंस जाती है? माया और अविद्या. अविद्या इज इंडिविजुअल डिल्यूजन और इग्नोरेंस. हु एम आई एंड दिस मटेरियल वर्ल्ड, माया, इसमें फंस जाती है सोल. When deluded and tempted by cosmic delusion or psychological Satan, the soul becomes the limited ego which identify itself with the body and the body's relatives and possessions. तो जब ये जो सोल है, जब ये डिसेंड करती है बॉडी में, तो वो माया और अविद्या में फंस गई, तो वो क्या बन जाती है? लिमिटेड ईगो. और वो लिमिटेड ईगो क्या करती है? वो क्या मानती है? अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करती है और जो बॉडी से रिलेटेड पोजेशंस है और रिलेटिव्स है उससे आइडेंटिफाई करती है. अभी रिसेंटली मैंने इतना अच्छा सुना, वो प्रेमानंद जी महाराज है जो वृंदावन में ना, तो जो उनके डिसाइपल्स है, तो दे यूज अ टर्मिनोलॉजी. वो कहते हैं इस शरीर की पत्नी, ये मेरी इस शरीर की पत्नी है, इस शरीर के पिता. दे विल ऑलवेज से व्हेन दे टॉक अबाउट देयर रिलेटिव्स, they say is sharir, this body is father, this body is wife. So it is such a good way of remembering always that I am not this body, right? Okay. The soul as the ego ascribes to itself all the limitations and circumscription of the body. Once so identified, the soul can no longer express its omnipresence, omniscience and omnipotence. It imagines itself to be limited, just as rich prince wandering in a state of amnesia in the slums might imagine himself to be a pauper. In this state of delusion, King Ego takes command of the bodily kingdom. तो गुरुजी कह रहे हैं, तो जब हम सोल बॉडी आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, बॉडी के पोजेशंस और रिलेटिव्स को अपना मानने लगते हैं, तो जो सोल होती है वो अपने आप को क्या समझने लगती है? दैट आई एम लिमिटेड एंड आई एम सर्कमस्क्राइब टू द बॉडी ओनली. हम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते हैं कभी कि बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है. और जब सोल ऐसे आइडेंटिफाइड हो जाती है तो उसके अंदर इनहेरेंट ओमनी प्रेजेंस, ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंस है, बट इट लूजेस दोज क्वालिटीज. और वो अपने आप को ऐसे महसूस करती है कि मान लो कोई बहुत अमीर, कोई बहुत राजकुमार है और उसकी याददाश्त हो जाए और वो भिखारी की तरह घूमे. So a rich prince is becoming a beggar because he has lost his memory and he is begging everywhere. So this is the state of soul which happens when it becomes body identified. The soul forgets what is the power I have, why did I come here, and it just like a beggar, we are begging here happiness, we are begging for peace, we are begging for love, because we have forgotten that this love, peace, wisdom, the calmness, it is already the inherent quality of soul. It is already there. Because the day that prince who's begging everything, the day the amnesia is gone and the prince remembers that I am the prince, he need not claim the kingdom. The kingdom is already there. In the same manner, the day we realize that who am I am this soul, then the kingdom is already there for us. The kingdom of happiness, peace, acceptance is already there. The soul consciousness can say with the awakened Christ in Jesus, I and my Father are one. The deluded ego consciousness says, I am the body, this is my family and name, these are my possessions. Though ego thinks it rules, it is in reality a prisoner of the body and mind, which in turn are pawns of the subtle machinations of the cosmic nature. So always remember, friends, that every time you are into a delusion and you are creating pain and depression for yourself, write it down somewhere that every time I'm creating this delusion, I am creating a reality of a prisoner. Because we are actually the prisoner in this body. The more you go into delusion, the more locks you are keeping over there. The more difficult it would be for you to realize the soul consciousness. So instead of it, you should tell yourself that I am just a witness to what is happening.
I am more than this. I have the power. In the macrocosm of creation, a great battle between spirit and the imperfect expressions of nature is continuously going on. Everywhere on earth, we are the witness of the silent struggle between perfection and imperfection. फिर गुरुजी ने पहले सोल का बताया, पूरा सोल का जर्नी बताया, that when the soul thinks of taking birth, तो तब से struggle start हो जाता है, and throughout the life we have this struggle, and then he told how it is happening in the astral body, physical body, causal body. Now he is telling about the struggle in the macrocosm, in the whole world itself. We see the struggle. Everywhere on earth, we are the witness of silent struggle between perfection and imperfection. The flawless patterns of spirit strive ceaselessly against the ugly distortions manifested by the universal delusionary force of Maya, the deceiving attribute of the devil. One power is consciously expressing all good, the other force is secretly at work to manifest evil. So, good and evil, they are the part of the earth reality. We have to accept that. Similarly, in the microcosm, the human body and the mind are veritable battlegrounds for the war between wisdom and the conscious delusive force manifesting as avidya, ignorance. Every spiritual aspirant aiming to establish within himself the rule of King Soul must defeat the rebels, King Ego, and his powerful allies. And this is the battle that takes place on the field of Dharam Kshetra, Kurukshetra. So Guruji is saying that the good and evil always exist, but a person who understands this, he creates a war between the wisdom and the conscious delusive force manifesting as avidya, that is ignorance और wisdom के बीच में war है. The person who is aware and every spiritual aspirant, और उसको क्या establish करना है उस war के बाद, जो king soul है उसका kingdom establish करना है. उसके लिए whom do we have to defeat? We have to defeat our own ego, our own rebels, and all the counterparts of ego which start from the desire, and then everything which comes within us, the jealousy, the hatred, mind, their fear, vagera vagera. And then when this war for a spiritual aspirant is happening, that war is the Dharam Kshetra, Kurukshetra. Understood? So first it is Kurukshetra, then when we start to fight the war, it becomes the Dharam Kshetra, Kurukshetra, and one day when we will win this war, it will only and only remain the Dharam Kshetra. जितने भी योगी है वो धर्म क्षेत्र से चलते हैं ना. The bodily field of activity and consciousness is actually divided into three parts according to the manifestation of the three gunas or influencing qualities inherent in prakriti और cosmic nature. तो ये हम सबको मालूम है, बॉडीली फील्ड में तीन गुणा होते हैं, रजस, तमस, सत्वा. ये हम सबको मालूम है. These three gunas are sattva, rajas and tamas. Sattva, the positive attribute, influences towards good, that is truth, purity and spirituality. वह क्या होता है? That creates good. That is सत्वा क्रिएट करना है अगर हमें अपने अंदर, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? ट्रूथफुलनेस का, प्योरिफिकेशन का और स्पिरिचुअलिटी का. तमस, द नेगेटिव एट्रीब्यूट. The tamas influences towards darkness or evil, untruths, inertia, ignorance. So anytime whenever we are into the mode of inertia, we are not truthful, we are into ignorance, we are into tamas. Rajas, the neutral attribute, is the activating quality working on sattva to suppress tamas or on tamas to suppress sattva. It creates constant activity and motion. तो जो रजस है ना, रजस का अपना कोई क्वालिटी नहीं है. रजस क्या है? एक्टिविटी और मोशन है. सत्वा ट्रूथ है, और जो तमस है वो अनट्रूथ है, इग्नोरेंस है. अब जो रजस जिसके साथ मिल जाता है वो वहां पे दूसरी चीज को सप्रेस करना लगता है. व्हेन द रजस मीट्स द सत्वा, दैट इज व्हेन यू आर एक्टिव टू क्रिएट द सत्वा गुना,
This rajas will help you suppress the tamas within you or wipe off the tamas within you. When you are using your rajas, that is your motion, your activity with tamas, then you will suppress the sattva within you. Make sense? So you have to remember this rajas is only the way we act. For example, the चाकू होता है ना, चाकू तलवार. So when it is used in the sattva way, the knife can be into the hand of a doctor doing the operation. When this knife is used by a person who is not good, a terrorist or a thief, then he might kill somebody from that knife. So the activity is being done with the knife, but when it is sattva, it is suppressing the tamas, it is creating more sattva, good for somebody. But when it is used with the tamas, it is suppressing the tattva. Understood, friend? So you should question yourself that every time when you are doing something, mansa, vacha, karmana, whenever you are doing something, what is it with which you operate? Is it sattva or the tamas? Tamas we all know, right? Sattva, tamas. The first portion of the three divisions of the bodily field consists of the periphery of the body and includes the 5 instruments of knowledge: ear, skin, eye, tongue, nose, and the 5 instruments of action: the mouth, which produces speech, the hands and feet, and the organs of excretion and procreation. गुरुजी कह रहे हैं अब बॉडी में हम कैसे देखेंगे कि तत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो हमारा पहला पोर्शन है इन 3 डिविजन्स का, सत्व, रजस और तमस का, बॉडीली फील्ड में, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द 3 डिविजन्स ऑफ द बॉडीली फील्ड कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है उसके अंदर, पेरिफेरी ऑफ द बॉडी एंड इंक्लूड्स 5 इंस्ट्रूमेंट. तो हमारा कान, हमारी जो ये सेंस ऑर्गन्स है वो कान, हमारी स्किन, हमारी आंखें, हमारा टंग और नोज, फिर हमारे ज्ञानेंद्रिय जो हमने पहले पढ़ा, माउथ है which produces speech, hand and feet, and the organs of excretion and purification. This outer surface of the human body is the scene of continuous sensory and motor activities. तो जितनी भी सेंसरी एक्टिविटीज है और जितना भी एक्शन हो रहा है वो कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी से होता है. हम अपने 5 सेंसेस से सेंस करते हैं, स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं. हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से एक्शन कर रहे हैं. So it is all happening on the bodily field and that is why it has got continuous है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सेंस मिले. फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू सिट फॉर मेडिटेशन, आप बैठे हो, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, आपको हवा ठंडी लग रही है या गर्म लग रही है, वो सब रहता है ऑपरेट इवन इन द एट द टाइम ऑफ द मेडिटेशन. तो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जो ये वाला फील्ड है ना, ये इसमें कॉन्टिन्यूसली इसमें इनपुट्स मिलते रहते हैं और कुछ ना कुछ मोटर सेंसेशंस होती ही रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ध्यान के लिए भी बैठे हैं और हमको यहाँ पे कुछ लगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो हमारी ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है, राइट. हमको फिर प्यास लग रही है थोड़ी, तो हम पानी पियेंगे. तो वी हैव ऑलवेज this is helpful for you when you meditate, you know, when we go deeper into this. Then why meditation is needed कि आपका ये कंट्रोल में आए. Till the time this is not in control, you cannot meditate in peace because you will be affected by the heat or the cold or by the hard surface or the soft surface or the thirst that you are feeling. So there will be no meditation. So you have to remember, you should mark that there are continuous sensory and the motor activities which are happening over here. Hence, it is fittingly called Kurukshetra, the field of external action where all activities of the outer world are accomplished. तो गुरुजी 3 गुना हमारा बॉडीली फील्ड को मिला के हमें कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र बता रहे हैं. तो ये कुरुक्षेत्र है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम वी हैव टू फाइट. कोई सेंसेशन हो रही है तो खुजली करना है, प्यास लग रही है तो पानी पीना है, भूख लग रही है तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बस अभी खाना है, राइट. कोई छोटा सा कीड़ा आके बैठ गया तो बस अभी हटाना है. और अगर गर्मी होगी तो नहीं नहीं अभी पंखा चलाओ, एसी चलाओ. व्हाट इज हैपनिंग, ये हमारा कुरुक्षेत्र है. पहले तो इसको विन करना है, राइट, ऑन द बॉडीली फील्ड. This place is the abode of rajas and tamas,
प्रीडोमिनेंटली रजस। तो यहाँ पे बॉडीली फील्ड में मतलब 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, यहाँ पे क्या चल रहा है? मोस्टली रजस और तमस, राइट? That is, the gross atomic matter of the physical body is created by the action of tamas on the cosmic creative elemental vibration of earth, water, fire, air, and ether, causing matter to appear in its recognizable 5 different varieties, that is, solid, liquid, fiery, gaseous and ethereal. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो पंच तत्व है, जब उसमें तमस मिल जाता है, तो वो पंचतत्व और तमस मिलके हमारा ये बॉडीली फील्ड बना रहा है। तो उसमें रजस क्यों है? क्योंकि उसमें हमारी, उसके कारण हमारी एक्टिविटी भी है, राइट? तो दैट, तो पंच तत्वों पे जब तमस काम करता है तब हमारी बॉडी बनती है, और उस बॉडी को हम रजस से, हम उस बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। Being the negative or the dark quality of nature, tamas is thus responsible for concealing the true subtle essence of matter under the cover of grossness and of creating ignorance in man the perceiver. तो हमने बोला कि जो सॉलिड, लिक्विड, फायर, गैस और जो स्पेस है, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है जो डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट कर रही है। बट अ सॉलिड इज नॉट, does not mean that there is no God in that. वाटर लिक्विड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि गॉड नहीं है उसमें। जो जो ईश्वर का तत्व है वो सब एलिमेंट्स में है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि वो एलिमेंट्स में से वो जो ईश्वर के तत्व को जो कंसील कर देता है, छुपा देता है, वो क्या है? वो तमस है। समझ रहे हो आप माया कैसे काम करती है? द माया विद इट्स पावर ऑफ तमस इज हाइडिंग द गॉड इन द पंच तत्वा। That is why this God is hidden in the Panchtattva. Then that is why we are not able to see or experience God in this body. And we are driven by the rajas and tamas of this body on the bodily field. तो हम क्या करते हैं? हम अपने सेंस ऑर्गन्स को, हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को, हम सिर्फ और सिर्फ बाह्य मुखी होके यूज करते हैं। Correct? We don't want to listen to the bhajan. We want to listen to the rock music. We don't want to look at a saint or a image of a god. We want to look something else. समझ रहे हो कैसे तमस इन पंच तत्वों पे वर्क कर रहा है आपके, और आपकी ही बॉडी में ही ईश्वर है, उसको हाइड कर रहा है। दिस इज व्हाट गुरुजी इज ट्राइंग टू से हियर। The predominance of rajas, the activating quality in the field of Kurukshetra, is evidenced in the restlessly active nature of man and in the ever-changing character of the world he strives to ineffectually, ineffectually to control. तो जो हमें रजस, अब तमस, इस बॉडीली फील्ड में हमें रजस कहाँ पे दिखता है? कि वी आर कॉन्स्टेंटली इनटू सम और दी अदर एक्टिविटी, एंड व्हाट डू वी वांट टू प्रिजर्व? वी वांट टू प्रिजर्व दैट which will not last for sure. पूरी जिंदगी इस चीज पे निकल रही है ना, मैं, मेरी बॉडी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, ब्ला 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 ब्ला, हम सब लोग ये कर रहे हैं। तो हम रजस कहाँ पे यूज कर रहे हैं? क्योंकि उस तमस ने ईश्वर को छुपा दिया है इस पंच तत्व के दुनिया में, इस शरीर में। तो हम रजस को किस लिए यूज कर रहे हैं? जस्ट टू मोर कंसील द गॉड विद इन अस, राइट? सो वी बिकम रेस्टलेसली एक्टिव। वो कभी आपने देखा है, बहुत कम लोग होंगे जो पूजा के टाइम पे भी आराम से बैठ जाए। घंटी बजाते रहते हैं, कोई बोलेंगे दूध दूध चढ़ा हुआ है, गैस बंद कर दो, बाहर कौन है, कौन आया है, और घंटी भी बजती रहती है, माला भी चलती रहती है। पीपल आर सो रेस्टलेस, राइट? बिकॉज वो सत्वा जो है, वो सत्वा तो तभी मिलेगा। फ्रेंड क्यों बता रहे हैं गुरुजी यहाँ पे ये सब? क्योंकि अल्टीमेटली जब मैंने आपको बोला ना, बॉडी पे जब तक कंट्रोल नहीं है, आप ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम एंशियस रहेगा, वो अपने सिग्नल्स आपकी सेंस ऑर्गन्स को भेजता रहेगा। आप आंख बंद करेंगे तो आपको आंख खोलने का मन करेगा। आप ध्यान के लिए बैठे तो कैसे कोई खुशबू आ गई या कोई स्मेल आ गई तो आपका वहां दिमाग चला जाएगा, कोई आवाज आ गई तो आप वहां चला जाएगा। तो जब तक यू डोंट बिकम completely peaceful and restful in this body, you can never meditate. You are in an illusion if you think that you are meditating. No.
ठीक है, तो गुरुजी इसलिए रेस्टलेसनेस को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। पहला स्टेप तो मेडिटेशन का यही होता है, ये रेस्टलेसनेस खत्म करनी है बॉडी की, और ये जो ये सेंस ऑर्गन है उसकी इनपुट लेने की। फिर सेकंड पोर्शन के बारे में बता रहे हैं। The second portion of the bodily field of action is the cerebrospinal axis with its 6 subtle centers of life and consciousness. I want to finish off with this paragraph, ठीक है, जो नेक्स्ट पेज की स्टार्टिंग तक है, then we'll do it next class. So the second portion of the bodily field of action is the cerebrospinal axis with its 6 subtle centers of life and consciousness and its 2 magnetic poles of mind and intelligence. Pulled toward grossness by manas, the subtle faculties in these centers emerge outwardly, projecting like the rays of full-flamed gaslight, keeping the sensory and the motor faculties active in the human body. तो 3 फील्ड बताया है गुरुजी ने, सत्व, तमस और रजस से, जो हमारी बॉडी में कर। पहला फील्ड समझ में आ गया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, जहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, जो तमस से, तमस ने ईश्वर को कंसील किया हुआ है, और हम रजस से सिर्फ एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी सबको हर वक्त चाहिए। फिर वो दूसरा फील्ड बता रहे हैं हमारी बॉडी में, वो कौन सा है, वो बता रहे हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस, हमारा हमारा ब्रेन और हमारा जो ये जो स्पाइन है वो एक्सिस बता रहे हैं, जिसमें हमारे चक्र है, और उसमें 2 मैग्नेटिक पोल्स बताए गुरुजी ने। वो क्यों, किससे क्रिएट होते हैं, एक मन से और एक बुद्धि से। अब जो मन है वो हमारी चेतना को ग्रॉसनेस के लिए की तरफ पुल करता है। Pulled towards grossness by manas, the subtle faculties in these centers emerge outwardly, projecting। अब जब हमारा जो मन है, जब वो 5 सेंसेस से इनपुट लेता है, वो हमें नीचे पुल कर रहा है, तो जो हमारी जो चक्रास होते हैं ना, गुरुजी चक्रा में बता रहे हैं, ये लिखा है ना यहाँ पे, लाइक द रेज ऑफ फुल फ्लेम्ड गैस लाइट। तो हमारे चक्रास में एनर्जी जाती है, फिर वो एनर्जी आउटवर्ड, बाहर की ओर जाती है, और उसके अनुसार हम इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन ने, आपने किसी को देखा, आपको उस व्यक्ति के साथ खराब एक्सपीरियंस था, यू हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद दिस पर्सन, सो मन विल से, oh she has again come, I don't like this lady, I hate this person। तो मन ने आपको ग्रॉसनेस की ओर लेके जाया, तो आपके हार्ट चक्र में क्या होगा, यहाँ से फ्लेम लाइक वो निकलेगा, it is going outside। So what your manas is doing, it is a magnet, it is emanating hatred, right, from your body field, from your heart chakra, which in spite of it, it would have been emanating love, right? But what it will emanate hate. And who is causing this emanation of hate from you, from your heart chakra, is your mind. अंडरस्टूड। एंड हाउ गुरुजी से कैसा लगता है, फुल फ्लेम्ड गैस लाइट की तरह बाहर की ओर हमारा पूरा एनर्जी फील्ड जाता है, ठीक है। कीपिंग द सेंसरी एंड मोटर फैकल्टीज एक्टिव इन द ह्यूमन बॉडी। तो फिर क्या होता है, मैंने पहले किसी को देखा, आई हेट दिस पर्सन, मन ने कहा आई हेट दिस पर्सन, तो हार्ट चक्र से वो फ्लेम जैसा कुछ जला, बाहर की ओर हेट जा रहा है, और सेंसरी और मोटर परसेप्शन भी हो रहा है। फिर क्या होता है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, या बहुत तेज ब्रेथ चल रही है, या हार्ट बीट बढ़ती है, या हैंड क्लेंच करते हैं, या पूरी बॉडी में एजिटेशन आ जाता है। मेक सेंस टू यू ऑल। हमने जो पहला फील्ड पढ़ा, वहां पे कोई इमोशन नहीं आ रही थी, वो बस था कि ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खुजली लग रही है। वो पहला फील्ड है हमारा। ये हमारा दूसरा फील्ड है, सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस पे चलता है ये। उसमें पहला पोल मन का है, दूसरा पोल बुद्धि का है। मन हमें ग्रॉसनेस की तरफ ले जाता है, वो हमें पूर्व से एक्सपीरियंस है उसको पुल करता है, और हमको बोलते हैं देख देख इसने देखो ऐसे बोला था, अब तू कैसे इसको प्यार कर सकती है। मन ये करता है, ठीक है। रिटाइलिंग इनवर्डली पुल्ड बाय बुद्धि। अब जब हमारी स्ट्रांग हो जाती है, विजडम से चलती है, तो हमारा जो ये आउटवर्ड जो जा रहा था चक्रा, वो अंदर की ओर आता है। रिटाइलिंग इनवर्डली पुल्ड बाय बुद्धि, the subtle faculties are absorbed in the cerebral region
and become merged into one soul consciousness like the flames of a lowered gaslight. This cerebrospinal axis with the six subtle centers in the Dharam Kshetra, Kurukshetra, field of subtle energies and supramental forces as well as the grosser action. तो गुरुजी ने इस जो हमारा ये वाला एस्ट्रल पार्ट है इसको क्या बोला? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र. पहला वाला पार्ट को क्या बोला? कुरुक्षेत्र. पंचेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया सेंस वो कुरुक्षेत्र है. ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी चेतना पुल हो रही है. जब हम ज्ञान में चलने लगेंगे, जब हम मन से पुल होते हैं, पहले सबसे पहले क्या होता है? इंस्टिंक्ट हमारा मन से आता है. ठीक है. मान लो कोई अगर बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति है जो मेरी लाइफ में, अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे डरती हूँ, लेकिन अगर वो आ जाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या आएगा? मन कहेगा अरे अरे इससे दूर रहो. तो हम पहले यहाँ पे हार्ट में कुछ होगा, कुछ बॉडी में होगा. फिर अगर अपनी बुद्धि अच्छी है तो अपनी बुद्धि क्या बोलेगी? नहीं नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग fearful, right? He is just like that, or might be this person has changed. How can I say that this person will not have changed, right? Or I know how to act wisely now. तो बुद्धि एक्ट करती है. अब इस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ध्यान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं जब हम ध्यान करते हैं ना तो जो हमारे ये सटल सेंटर्स है इससे जो नर्वस सिस्टम से पहले एनर्जी बाहर जा रही है. चक्रास कैसे वर्क करते हैं? नर्वस सिस्टम पे. वो नर्वस सिस्टम को इम्पल्सेस भेजते हैं, उससे हम अच्छा बुरा गर्मी सर्दी फील कर रहे हैं. लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, दैट इज द साइंटिफिक ध्यान जो हम करेंगे. खाली नॉर्मल ध्यान मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे, ठीक है ना? व्हेन यू डू द साइंटिफिक वे ऑफ ध्यान एज टोल्ड बाय दी गुरुज, तो आपका नर्वस सिस्टम धीरे 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 पीस में आ रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेडिटेशन. फिर यहाँ पे क्या चलेगी? हर सेंटर पे क्या चलेगी? जस्ट लाइक अ फ्लेम ऑफ गैस, एंड दैट फ्लेम विल tend you to go inside, inside, inside. And then once when you are inside, then your energy in the spine starts to flow and then you reach here. ध्यान क्यों नहीं लगता है हमारा? क्योंकि हमारी एनर्जी इट्स हेवायर. हमारी नर्वस सिस्टम में कुछ और चल रहा है, किसी चक्रा पे लेवल पे कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और हम सोचते हैं हम 30 मिनट ध्यान कर ले. वो कुछ ध्यान नहीं लगता ना, क्योंकि जब तक बुद्धि हमारी प्रखर नहीं होगी, जब तक बुद्धि नहीं बोलेगी कि इंपॉर्टेंट क्या है, द थिंग दैट विच आई एम थिंकिंग अबाउट, और द फैक्ट दैट आई हैव टू डू द मेडिटेशन विच विल टेक मी अवे फ्रॉम माया. जब तक बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी तब तक मैग्नेटिक पोल में ये मन ही काम करता है. अंडरस्टूड? फिर बुद्धि क्या बोलेगी? अगर बुद्धि धृतराष्ट्र है, ब्लाइंड बुद्धि है, तो बुद्धि बोलेगी छोड़ो, मुझसे नहीं हो रही मेडिटेशन, इससे अच्छा तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉर्ट्स देख लेती हूँ. यूट्यूब के वीडियोस देख लेती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी डू, राइट? चलो इतना ही पढ़ेंगे. कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बताओ, कुछ रिवलेशन हुआ सुन के आज अपने बारे में, अदरवाइज विल फिनिश ऑफ. मैम मुझे एक चीज पूछना है। हाँ अपर्णा. हाँ जी मैम। हाँ बोलो. ये एस्ट्रल बॉडी ये सब सब सुना मैम, सब समझ में आया। देन वन वन ऑफ माय क्वेश्चन इज व्हाई डू वी फॉरगेट? इट्स लाइक आज रात में सोए, कल सुबह उठे, अगेन वी आर लर्निंग एबीसीडी, फिर कल रात में सोए, परसों सुबह उठे, फिर वी आर लर्निंग एबीसीडी। So, if it is stored in our astral body, whenever we are born, why don't we remember it? Or why don't we understand कि this was the path we were walking last जन्म में, तो इस जन्म में we should start from there. वही तो व्हील ऑफ माया है ना. डुअलिटी के वर्ल्ड में पैदा होते हैं हम, जिसमें ऑलरेडी माया का पर्दा डला हुआ होता है जब हम यहाँ आते हैं. तो होल स्ट्रगल इज टू बी इन द माया एंड नॉट बी ऑफ द माया. अंडरस्टूड? But इसका पर्पस क्या है मैम? मतलब क्या like what God wants? Like every day if we are learning and every day if we are forgetting, what is the purpose? Who said every day you were Every day we getting? No. नहीं मतलब जैसे एवरी डे आई सेड इस जन्म में मैंने कुछ सीखा, मैं मर गई, नेक्स्ट जन्म में आई अगेन स्टार्टेड एज अ क्लीन स्लेट, सो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने क्या क्या किया है.
So maybe my choices in the next life will be very different. So what is the purpose of this thing? मतलब वो नहीं समझ में आ रहा है. choices will not be different in the another life. Your choices will be driven by what is there in your manas, what is there in your imprint. अच्छा. You think that I am making choices, but the problem is the choices are already being made first within you through your astral body, through your manas, and then you think that I am taking the decision. That means whatever we are doing in this life or past life, they have control over our thinking, our subconscious, and they drive us to make the choices in this life. No, but the feelings and the decisions has been taken by the mind only, na. So the soul is entrapped into the mind, the man, and the buddhi. Hmm. So till the time the buddhi, Okay. the whole जिंदगी का ध्यान का पूरा पर्पस मन के परे जाना है, ये बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मन के Hmm. हमारी रियलिटी है, बट मन के परे जाने के लिए बुद्धि को तो प्रखर होना पड़ेगा ना. So the right input has to be given to the buddhi, the right wisdom has to be given to the buddhi, so that I know that when my manas, my man is asking for something, I should have the ability to distinguish and discriminate, is it right or wrong? Correct. When I start And to that right or wrong is given by input is given by our past life. till the time you are not becoming aware, you are not reading the scriptures, you are not doing the meditation, you don't want to change your life, you are driven by your instinct, driven by your Dhritarashtra, the blind mind, who is into Blind. who thinks I am this body, right? So when the buddhi it has to be told to us again and again, again and again that I am not this body. So when we read Gita, when we read the scriptures of our Guru, we listen to the good videos, then we are always reminding ourselves that I am not this body. Then how do I know I am not this body? Then we go on this quest of the spirituality, having a spiritual path, doing the meditation, leaving so many things in life because we understand the uselessness of all those things. Got it. Right? ये क्वेश्चन था, जैसे अगर हम सबको अपना मानेंगे कि सब हमारे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट तो आएगी, और अगर हम ये सोचेंगे कि कोई भी मेरा नहीं है, तो वो तो वैराग वाला चीज आता ही है ना, कि कोई नहीं है. जब आप बोलते हो हम्म, कोई नहीं है, मेरा सिर्फ ईश्वर है, तो ईश्वर इज ओनली लव एंड विजडम. At that time also you will be operating with love and wisdom with everybody. When you think that everybody is mine, then also you will be operating with love with everybody because everybody is yours. Understood? किसी भी तरीके से सोच लो, ऑपरेट तो ईश्वर को ही करना है. मतलब हाँ, सब में ईश्वर है, आप ऐसा सोच के सबको अपना मानोगे, और जब आप सोचोगे कि कोई नहीं है, सिर्फ कोई नहीं है तो ईश्वर है, तो तब भी ईश्वर है. ठीक. तो जब ईश्वर है, सिर्फ मैं और ईश्वर ही है, तो कोई कुछ गलत कर रहा है तो ईश्वर करवा रहे हैं, कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो ईश्वर करवा रहे हैं, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो ईश्वर करवा रहे हैं. करेक्ट. सो अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, जाना उधर ही है कि सब कुछ ईश्वर का ही है. ये भी बुद्धि है. अगेन हम अपनी बुद्धि को प्रखर कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, जिससे हम अपने मन से ना चले, क्योंकि जब तक हम अपने मन से चलेंगे, मन माया में लगा रहता है हमेशा, है ना. तो हमको जब तक हम मन को अलग नहीं करेंगे, हम बुद्धि नहीं लेके आएंगे, तब तक हम ऐसे ही रोते धोते रहेंगे लाइफ में. ठीक है. ठीक है जी. Thank you, ma'am. ठीक है जी. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. बाय बाय. टेक केयर. हरे कृष्णा. और जो हरे पढ़ा है, कृष्ण. Thank you, ma'am. जय गुरु. Gurudev, reflect back on what we have studied today. Yes, ma'am. चलो बाय.